Afternoon, students. Some students have some problems in Flair's triangle program, so I'm clearing it today that how can we make a program for Flair's triangle in Python. Okay, so what is flat triangle? Flat triangle is like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 like this. Okay, this is your Flair's triangle. Here you can see that there is one pattern. What is the pattern here? देखो, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले आप ये देखा करो कि प्रोग्राम का पैटर्न क्या है. फर्स्टली you can see that there are rows and there are columns. Okay, and you can also see here that if there is a first row there is one column, if this is a second row there are two columns, if this is a third row there are three columns, this is a fourth row there are four columns. But the numbers are not dependent on these rows and columns. Numbers are going continuously from 1 through 10. Okay, so if I want to make this program with the help of firstly I want to clear it that you can make this program either from for loop, either from while loop, whatever you want to use. So if I like to use for loop, okay, so in that case firstly what I have to do, firstly I will take a number, suppose num is equals to 1, from where I have to start the pattern. Okay, so and then I have to get to the loop. Like कितनी रोज है इसमें, आप देखो कितनी रोज चल रही है, 4 रोज, 1 2 3 4. So I will write like for I in range 4, so it will go 4 times 0 to 3. Then you can see that if there is a first row there are only one column. That means मैं यहाँ पे जो अपना सेकेंड लूप दूंगी, देखो इन दिस प्रोग्राम यू हैव टू यूज द नेस्टेड लूप. ओके, फॉर j in range you can write here like this also, 1 comma 5. So that it will start from 1 through 4, that is 4 times चलेगा. And here I will start from 1 comma I plus 1. I plus 1 means what? Suppose I अगर सबसे पहली बारी में 1 होता है, so तो j 1 से स्टार्ट होगा और 1 तक चलेगा, क्योंकि i plus 1 से क्या मिलेगा उसे 2, तो 1 से लेकर 2 के बीच में उसको क्या मिलेगा 1. दैट मीन्स वो 1 टाइम चलेगा. एंड हियर आई विल प्रिंट num कॉमा एंड सो दैट द एक रो की वैल्यूज एक ही लाइन में आए उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एंड इक्वल्स टू स्पेस. एंड हियर आफ्टर completing the nested loop I will write print so that it will come to the next line. Okay, that's it. And I have to yes, and I have to increase the number one by one, so here I will write num equals to num plus 1. Firstly I will execute this program if it is running properly or not. See, the output is very much correct. Now अब देखो मैं दोबारा से समझाती हूँ इसे. सबसे पहले हमारी num की वैल्यू 1 हुई, i में सबसे पहले कितना आया 1, j में j कहाँ से कहाँ तक चलेगा 1 से 1 तक, एक बार चलेगा, प्रिंट करेगा 1 प्रिंट हो गया. num की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, लेकिन ये j का लूप मेरा फिनिश हो चुका है, ये बाहर आएगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे करेगा किसके थ्रू, प्रिंट फंक्शन के थ्रू. फिर i की वैल्यू कितनी होगी 2, द j अगेन स्टार्टेड फ्रॉम 1 टिल 2 plus 1 that is 3, that is ये 2 टाइम्स चलेगा, 1 फिर 2, दोनों बार num की वैल्यू कितनी होगी, पहले 2 फिर 3, और num की वैल्यू कितनी होकर बाहर निकलेगी 4. अगेन
it will come to the next line, then the i's value will become 3. So it will go through 1 2 3. तो 3 times वो क्या प्रिंट करेगा, 4 5 6, just like that 7 8 9 10, then finish. This is your flat triangle. Still if you have some problem you can ask me. Okay, that's all for today.